is महुआ जी, comfortable with embracing. महुआ जी थोड़ा सा प्रेम से बोलिए। हाँ, ठीक अच्छा है, से बोलिए। which is comfortable. हाँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से सांसद महुआ मोइत्रा ने जब से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी पार्टी की ओर से बात रखी है, तभी से उनके व्यवहार और भाषण को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना होता है। लेकिन जिस तरह से गुस्से से भरी महुआ मोइत्रा चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात रख रही थी, उनके तेवर को देखकर अध्यक्ष पीठ की कुर्सी पर बैठी रमा देवी को भी महुआ मोइत्रा को बीच में ही टोकना पड़ गया कि जरा प्रेम से अपनी बात रखिए, ये संसद है। You fear an India which is महुआ comfortable जी, with embracing. महुआ जी थोड़ा सा प्रेम से बोलिए, इतना गुस्सा नहीं अच्छा। करिए। गुस्सा अच्छा आता से है, बोलिए। क्या करें? हाँ, ठीक है, अच्छा से बोलिए। which is comfortable. हाँ, आप कह रहे हैं प्रेम से बोलने पर रामधारी सिंह दिनकर का हाँ, एक कविता हम आपको बोल दे। सहनशीलता, क्षमता, सहनशीलता, अपनाइए, क्षमा, अपनाइए। दया को तब पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। हाँ। तो सहनशीलता, क्षमा सब देंगे, पर पीछे हाँ, थोड़ा ये- तो बल का दर्प होना भी चाहिए। नहीं थोड़ा होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं होना डेफिनेटली चाहिए। आपके बात हम मानते हैं, थोड़ा ले आते हैं, पर बल का दर्प पीछे है और जग ये पूछते अभी है। सहनशीलता सबसे पहले। रमा देवी का बस यही टोकना टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने रमा देवी को उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही संसद से बाहर आई, रमा देवी को लगी कोसने। उन्होंने रमा देवी पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुझे 13 मिनट का समय दिया था। जब इस बारे में उनके चैम्बर में जाकर बताया तो उन्होंने कहा कि वो आसन पर नहीं थे, इसीलिए मुझे इल्जाम नहीं दिया जा सकता। जब और सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि यह उनकी महानता थी कि उन्होंने मुझे 13 मिनट का समय दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसके बाद पीठासीन रमा देवी पर भी भड़कते हुए कहा कि मुझे रोकने वाली चेयर कौन होती हैं, वे लेक्चर देने वाली कौन है कि मुझे प्यार से बोलना चाहिए या गुस्से से। यह आपका काम नहीं है मैडम, आप केवल मुझे नियमों को लेकर सही कर सकती हैं। आप लोकसभा में मेरी मोरल साइंस की टीचर नहीं हैं। संसद में रमा देवी की ओर से टोके जाने पर महुआ मोइत्रा इस कदर भड़की हुई थी कि उन्होंने ट्वीट के बाद संसद के बाहर भी मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकाली। Sitting there, and no dishonor to her chair, but you tell me, is it any of her right, is it any of her business to tell me how I should do my speech? She tells me, don't इतना गुस्सा पे मत बोलिए। हम गुस्सा में बोल रहे कि हम प्यार से बोल रहे, that's up to me, that's my tenor, that's my tone. If the things this government are doing, if we have to sit there and control even our gussa, then what is left? Number one, she had no business to do that. The second thing, I did not finish my allotted time of 13 minutes. When you see how much I spoke, I did not speak for 13 minutes. I was asking only to complete my last paragraph, which was very important. And I spoke in my last paragraph was about the opposition and to tell the opposition that this is exactly why all of us need to come together. There are 200 seats from Bihar to Kerala, where the BJP, with all its might, has still not been able to get more than 50 off. So if we, the opposition, come together and we fight in the north and the west, their game is over. This is over. This brute overriding of elected representatives of people's voices is over. So उस सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही लाएंगे. That's important. We have to do it. And enough of daya, enough of Shama, enough of Sahanshilata. It is time now to become Tipu springing tiger and show these guys. It's enough of us in the opposition. ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से सांसद महुआ मोइत्रा ने जिस तरह का व्यवहार दिखाया है, उस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुरी तरह भड़क गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, आसन का प्रयास होता है कि सदन निष्पक्ष रूप से नियम और प्रक्रियाओं से संचालित हो। अध्यक्ष पीठ पर बैठने वाले सदस्य को भी अध्यक्ष के सभी संवैधानिक अधिकार हासिल होते हैं और इसी अधिकार से वो सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की घटना पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि सदन के अंदर और बाहर की जाने वाली टिप्पणियों को उन्होंने गंभीरता से लिया और सदस्य सदन में, सदन के बाहर और सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं करें, यही उचित होगा, उन्होंने कहा। अपने व्यवहार के लिए लोकसभा अध्यक्ष से फटकार खाने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में आपको बता दें,
उन्होंने सदन में बोलने से पहले एक विवादित ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था, मैं आज शाम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा को संबोधित करूंगा। इसीलिए भाजपा को सलाह देना चाहती हूं कि वह संबोधन के बीच में व्यवधान डालने वाली टीम को तैयार कर लें और गोमूत्र के शॉट भी कराएं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जिस तरह का व्यवहार किया, उसे लेकर टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के साथ साथ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, फारूक अब्दुल्ला, ए राजा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी गुरुवार को लोकसभा में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और अध्यक्ष के साथ ही सदन की गरिमा को ध्यान में रखने का भरोसा भी दिलाया। बहरहाल महुआ मोइत्रा के जिस भाषण पर इतना बवाल मचा हुआ है और राष्ट्रपति के भाषण पर जो उन्होंने जवाब दिया था, आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। Honorable Speaker, sir, my esteemed colleagues, I stand today to respond to the Honorable President's address on behalf of my party, the All India Trinamool Congress. The President's address is the government's assessment of the state of the Union today. And I stand before you to vehemently disagree with that assessment and to ask the most important question that faces us all. What is the kind of republic we want? What is the India that we want today? What is our idea of India that we are willing to stand up for, fight for, be abused for, get jailed for? Ours is a living constitution. It breathes as long as we are willing to breathe life into it. Otherwise, it's just a piece of paper, black and white, that can be smudged into shades of grey by any majoritarian government. An elected government bears the people's trust to uphold the constitution, both in letter as well as in spirit. If the government fails, we all fail. So it is not enough for Indians to sit back and watch and wish each other a happy Republic Day. This government wants to alter history. They are fearful of the future and they mistrust the present. Robert F. Kennedy in the 1960s had warned of such hateful forces. The Honorable President, early on in his address, speaks about freedom fighters who secured India's rights. He speaks of Guru Tegh Bahadur, V.O. Chidambaram Pillai, and Netaji Subhash Chandra Bose. But this is just lip service. In reality, recalling India's past, a past of decency, a past of plurality, a past of secularism, makes this government very, very insecure. So the Disallow Republic Day floats from West Bengal, from Tamil Nadu, from Kerala, floats on Netaji, who taught us to say Jai Hind, floats on Subramaniam Bhartiyar, who said that even if Indians are divided, they are still the child of one mother. Floats on V.O. Chidambaram Pillai, who even when he was threatened with being imprisoned on sedition, refused to stop his political activity. And floats on Sri Narayan Guru, who picked up a rock and consecrated it as Erava Shiva. The invocation of an imaginary past, however, goes on and on. This government has reinvented Savarkar as a freedom fighter. The apology letter he wrote to the British, begging for release, is now being recast as some kind of strategic masterstroke. The appropriation of Bhagat Singh, who was staunchly anti-fascist. The appropriation of Sardar Vallabhbhai Patel, who banned the RSS after becoming Home Minister. The President's address refers to Netaji on multiple occasions. I will remind this Republic that this is the same Netaji who said, the government of India should have an absolutely neutral and impartial attitude towards all religions. Would Netaji have approved of a Hardwar Dharam Sansad that issues blood-curdling calls for Muslim genocide? On June 14, 1938, in Comilla, now Bangladesh, Netaji said, communalism has raised its ugly head in an all-out nakedness. Netaji's Indian National Army's insignia was Tipu Sultan's springing tiger. The same Tipu Sultan that you erased from our textbooks, after whom you cannot bear to name roads or sports stadiums. The INA's mottos were three Urdu words, Ittihad, Itmad, and Qurbani. Unity, trust, and sacrifice. The same Urdu language that this government is so delighted to replace with Hindi as the first and official language of Jammu and Kashmir. The President's address refers to Khadi being a symbol of consciousness under the leadership of Bapu. But the unholy Dharam Sansad's issue calls to kill Bapu all over again. You have already succeeded in glorifying Gandhi's assassins. But just for the sake of those children who will grow up watching Beating the Retreat without his favorite hymn, let me remind you of some of the lyrics.
Come not in terror as the King of Kings, but kind and good, with healing in thy wings. Tears for all, a heart for every plea. Come, friends of sinners, abide with me. The President's speech lauds these great personalities for fighting for our rights, but in reality, the masters of our republic fear their own irrelevance if in future India and Indians are actually guaranteed the rights and liberties enshrined in our Constitution. The Freedom House Report 2021 changes India's status from free to partly free. The World Press Freedom Index, India retains 142nd spot out of 180, remains one of the most dangerous places globally for journalists today. The Human Freedom Index 2020, measuring personal, civic and economic freedoms, puts India at 111th spot out of 160. You fear a future which is a future India which is comfortable in its own skin. What do I mean by this? You fear an India which is comfortable with embracing. महुआ जी थोड़ा सा प्रेम से बोलिए, इतना गुस्सा नहीं करिए, अच्छा से बोलिए, हाँ अच्छा से बोलिए, which is comfortable. हाँ आप कह रहे हैं प्रेम से बोलने पर रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता हम आपको बोल दे. सहनशीलता, क्षमा, दया को तब पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है. तो सहनशीलता, क्षमा सब देंगे, पर पीछे थोड़ा तो बल का दर्प होना भी चाहिए. नहीं, थोड़ा होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं. डेफिनेटली आपके बात हम मानते हैं, थोड़ा ले आते हैं, पर बल का दर्प पीछे है और जग ये पूछते अभी है. सहनशीलता सबसे पहले. You fear a future you fear a future India which is comfortable in its own skin, which is comfortable with conflicting realities. So you fear an India where a Jain boy can hide from home and enjoy a kati kebab on a street cart in Ahmedabad. So what do? You forbid non-vegetarian street food in Gujarat municipalities.